नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्वाध्याय में। पास्ट लाइफ एक्सप्लोरेशन लिंडा बैकमैन की बुक हम देख रहे हैं और इस बुक में कुछ नए कंसेप्ट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं जिनके बारे में हमने पहले तो सुना था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा प्रॉपर डिटेल आया है। एक कंसेप्ट हमने देखा था सोल रे, सोल आर्केटाइप। 7 तरह के सोल रेज बताए गए हैं। हम हमारे लाइफ में क्या लेसन्स हैं उसके आधार पर सोल रेज का कंसेप्ट। और उसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट लिंडा बैकमैन ने काफी अच्छे से बताया है, साइमल्टेनियस इनकारनेशन। सोल स्केल जो माइकल न्यूटन का की टीचिंग का अडॉप्शन है, वहां पर 10 स्केल तक में है, उनमें जो एडवांस सोल है उनके लिए ये चीज मिलती है, साइमल्टेनियस इनकारनेशन का कंसेप्ट। तो इस साइमल्टेनियस इनकारनेशन का चैप्टर आज हमारे साथ करेंगी बीना जॉब। So now I hand over the stage to Veena to describe this chapter. Thank you. We are reading this chapter 9, simultaneous reincarnations, and it starts with the beautiful words of Swami Vivekanand. He says, कोई भी आपको टीच नहीं कर सकता कि स्पिरिचुअल कैसे होना है. There is no other teacher but your own soul. So it's we are our own teachers and we grow from the inside out. और जैसे लिंडा बैकमैन all throughout the 8 chapters, she's trying to show how we can check whether we have evolved as a soul. So in simultaneous reincarnations, she says that when we are with our guides before taking our birth, we choose our parents, and there is a certain holographic 3D image which is there with our higher soul, and we decide on the timing of our new life through our guides' input. So we cannot blame anybody for the life that we have now. We have planned it, and we have to and we do have all the necessary strength to face it. And जिस ब्यूटीफुल तरीके से उन्होंने बताया कि जो अपना इनकारनेटेड सोल है, it carries a mirror image of the remainder of our soul energy in the celestial realm. That is, our higher soul has got a mirror image of our incarnated soul, and so we do have the exact content and frequency as our energy in spirit, termed the higher self. So the higher self is the tutor inside us who teaches us to lead our life in the best possible way to fulfill our soul blueprint. और उन्होंने ये भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में बताया है कि कैसे हम खुद अपना एक we can access our soul libraries by being through trance or altered state of consciousness. So your right brain hemisphere accesses your guides and higher self, and you tap into your soul libraries and get all the information about your patterns and how what is the message that you need now to lead your life in the best possible way. So just जिस तरह से एक चैनल अपने गाइड से इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसी तरह हम अपना खुद का चैनल बन के हम हमारे लिए इंफॉर्मेशन हम लाते हैं. तो इतना सब कुछ अपने पास, we have all these ways of living our life in the best possible way and not blame others. And then you go to, she's teaching us about enlightened earth beings and soul splits, and that's a very interesting thing wherein she says that highly evolved souls, where like suppose you pour water into a glass, the higher soul pours
the soul energy into 2 or 3 glasses, like that's you can live in 2 or 3 bodies and complete a very important transition on the earth. So that's how many regression sessions illustrated that highly evolved soul incarnate with a further holographic aspect of their soul energy, concurrently embodied in more than one another body. So there may be 2 or 3 people, 2 or 3 incarnated soul for one higher soul. So someone else on the planet is a separate and related aspect of the same soul, since our soul can reside in 2 or more different bodies at once with purpose. So I think people like the high masters and all finish their purpose on the planet to bring equality and compassion. And when we have this transition periods, like from the Piscean age to the Aquarian age, we have lots of souls, advanced souls, which may be like 5% of the world population. They are the enlightened earth beings. And they are at a soul scale of 8 and above. And it takes thousands of years to come to reach the stage of soul scale 8. And they have really worked on themselves to reach this stage. So these enlightened earth beings have a variety of responsibilities and capabilities. In the earlier stages of soul development, like most of us, we are all in the soul scale levels 1 to 5, and we are focusing primarily on ourselves to make ourselves more soul conscious and leave away all our जो भी अपना काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, वो सब हम मिटाते हैं ये 1 to 5 स्टेज में. एंड एनलाइटन अर्थ बीइंग्स जो है वो एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ के लिए हेल्प करते हैं. एंड एनलाइटन अर्थ बीइंग्स का दे आर लाइक they take at least 100 to 700 years. They have a period during which they are given an assignment to bring compassion and equality in the earth, and they are the ambassadors or like of the master guides who manage and coordinate the spiritual realm. Advanced souls are expected to operate. They are based on humility rather than ego. So they are very humble, and they try to bring change in a very quiet and nice way. So here we have like basically all these assignments need our brain to be very sophisticated. अपना brain उतना sophisticated नहीं होता है, तो 2 incarnated souls लगता है वही काम करने के लिए. तो इसमें हम देखते हैं कि एक leap frog का मतलब है कि you make a huge jump, like right from first grade का बच्चा सडनली 10th ग्रेड में जाता है ना, तो उस तरह का लीप फ्रॉग करता है टाइम में. तो लिली का सोल है, शी इज कम फॉर शी इज लिंडा's क्लाइंट, एंड शी इज एन एनलाइटेंड अर्थ बीइंग, और वो कैपेबिलिटी करती है 6 बॉडीज में एक टाइम पे एम्बॉडीमेंट करने का. हर हायर सोल is existing in 6 incarnated forms. So basically लिंडा ने ये देखा कि most of the time उसने फीमेल जेंडर चूज किया है, एंड कुछ नॉलेज उनको है मेल इनकारनेशंस का भी. बट सिंस द ईयर 1840 लिली हैज taken 5 Jewish lives, and उसमें से 4 जो जीवन है उसका वो fully dedicated to spirituality है. and मीन्स हर सोल का एक एसेंस होता है, तो इनका बहुत ज्यादा एक रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है. तो उनका जो सोल एग्रीमेंट है, इट इंक्लूड्स स्कॉलरशिप, टीचिंग, religion or spirituality, serving as a public figure, and being female. So these are her assignments, the soul agreements with her guides. So
बेसिकली जब हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं तो इसमें हमको ये आइडिया मिलता है कि तुम कौन हो, तुम क्यों आए हैं यहाँ, और तुमको क्या करना है करंट लाइफ में। तो एस्ट्रोलॉजिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, हम खुद अपना पाथ चार्ट कर सकते हैं और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ अपना लाइफ लीड कर सकते हैं। उसी तरह उन्होंने दूसरा जो है स्टेला के बारे में भी बताया है, एक दूसरी क्लाइंट उसके पास रिग्रेशन में Stella says that as she leaves the past life, she senses there is a concern about the way she died in an explosion. तो जैसे बॉम्ब ब्लास्ट में वगैरह मरते हैं तो she has had a very difficult traumatic end. तो जब वो स्पिरिचुअल रेल में जाती है तो उसको बहुत पावरफुल बीइंग्स मिलते हैं एंड उनको सबको बहुत कंसर्न होता है कि उनके एनर्जी में क्रैक हो गया है एंड उसको रिपेयर करना है, और उनको ऐसे वॉश करते हैं पूरा हीलिंग लाइट में. लाइट गोज इनटू द क्रैक्स एंड इट फिल्स हर क्रैक्स. जस्ट इमेजिन लाइक एन एनर्जेटिक क्रैक एंड शी सेंसेस अ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग. उसको लगता है कि सब जगह प्यार है और मैं घर आ गया हूँ एंड सब हीलिंग बीइंग्स सब हंस रहे हैं and they're all laughing and they're trying to lighten the atmosphere because इतना contamination हो गया है कि उसको clean करना है. थोड़ी देर के बाद उसको ऐसे एक बड़ा बिल्डिंग दिखता है and एक that place has some purpose and उनके हाथ में एक फाइल है and she's going to give a class and एक group of people है, कुछ young है कुछ old है and उनको बहुत welcomed feel कर रहा है and she's going to give a talk to this group. And this talk is about dar and transparency, like how honest you can be, no, about what you're truly feeling. And so she's teaching the lesson that we are to be honest and open with others about ourselves and अपने डर के बारे में. जब हम ओपन हो जाते हैं तो उस अपना डर कम होते जाता है. So those in the class सब उसके स्टूडेंट्स है. Some have incarnated on earth. कुछ लोग अर्थ में जन्म लिया है, कुछ नहीं लिया है. And as a soul of higher advancement, she has a great responsibility to teach others. So she has to teach, and she sends this teaching via energy. So even touching type of energy, like pranic healing is a no touch therapy, but she's talking about tactile energy. And she sends this teaching via energy, and it is very difficult to explain because such things are very experiential. And then she goes into a larger room and beams of light ऐसे shine हो रहा है and she's feeling so good and she वो एक advanced souls के group में है and एक दूसरे को वो लोग light exchange कर रहे हैं and ये इस practice से they are sharing their light with others. So it's such a beautiful place. And उधर उनके 2-3 टीचर्स है और उन 3 टीचर्स को वो जानती है एंड बहुत एंशिएंट है. इट्स लाइक वेरी ओल्ड सोल्स है ना, बहुत एक्सपीरियंस्ड है. एंड वो लोग बैठते हैं और वो उनके सामने खड़े रहती है, मीन्स रिस्पेक्ट देती है एंड उनको पूछती है कि मेरा लाइफ पर्पस क्या है. एंड उनको वो टीचर्स उसको बताते हैं कि तुमको सिर्फ एक हम्बल एंड अनअज्यूमिंग टीचर बनना है, कि बहुत ऐसे फेमस टीचर नहीं बनना है कि like you'll not be like Gautam Buddha or something like that, but you'll be a very humble and unassuming teacher. I am not to be the center of attention. ऐसे कहीं पर भी गया तो तुम इतना शाइन नहीं करोगे and you should teach quietly in the background and you have to shine without shining. And टीचर्स उनको बताते हैं कि कैसे एक सोल का बर्थ होता है. First, a particle of divine energy is released from the highest source. So from the highest source, one particle of divine energy is released. These particles gradually drift away from the source. And as they do, they develop and grow. I'm sorry about this. It's not clear, I think, this because of my PDF.
It takes an incredible amount of time for each to have complete inner power to incarnate. Each particle has an energy that feeds back to the source. So जो incarnated soul है हमेशा वो higher soul से और source से energy लेते रहते हैं. The original energy source is difficult to explain to humans, but could be described as condensed purity. Means जैसे condensed milk होता है उसी तरह purity means what do you call purity is बहुत पवित्रता जो condensed form में है. And प्यार भी उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते. बहुत सारे वर्ड्स है जो वर्ड्स आर वेरी लिमिटिंग, यू नो. सो दिस इज अ वेरी एक्सपीरियंशियल लव शी इज फेसिंग. एंड उनके करंट लाइफ में वो स्टेला है एंड उसमें उसने 25 to 30% उसका सोल एनर्जी लाई है. और ये अमाउंट इज सफिशिएंट टू कंप्लीट हर टास्क. सो शी इज टोल्ड दैट उसका another उसका एक सोल का एक another aspect in body at this time as a split incarnation है. So they inform her that there is a split incarnation of her and उसको उनके बारे में कुछ पता करने की जरूरत नहीं है. And she used to work with all her students who have already taken birth, and she has to work with some of her students. Some of them are her family members. उनके फैमिली में भी वो लोग हैं. एंड कभी कभी उस चला को लगता है कि she should have brought more of her soul force to accomplish her life agreement. लेकिन एक बार it is not possible to gain a greater percentage of soul energy once we are given an embodiment. So once she has become an enlightened earth being, then she cannot get more soul energy. She should have decided that before being incarnated. So that's Stella's soul regression is where it sheds so much of knowledge, you know, about many principal concepts about our core being. When a life एक बार अपना जिंदगी जब अगर बहुत सारा फिजिकल पेन, इमोशनल पेन, स्पिरिचुअल ट्रॉमा इसमें एंड होता है, तो अपने गाइड्स जो बहुत ही काइंड होते हैं ना, दे प्रोवाइड द हीलिंग रिक्वायर्ड एंड दे मेंड आवर डिवाइन फोर्स. सो इट्स सो ब्यूटीफुल एंड दे हैव enlightened earth beings. They have got the soul skill to serve as teachers to less developed souls. So it's a very important thing to help other souls to develop, and they're in service to humanity in one way or the other. So I think all these main gurus which we see, they're all in service. Stella's soul regression offers an essential understanding डर के बारे में, ट्रांसपेरेंसी के बारे में और ऑनेस्टी के बारे में. अपने को पता चलता है कि जिस तरह एक तरह का डर अपना प्लेनेट पे है ना, कि आजकल we always have this fear that we are being watched or suddenly the artificial intelligence will take us over, और हर तरह का डर हमेशा रहता है. तो उस डर को मिटाने के लिए we have to be open, एक दूसरे के साथ कैसे मिलना चाहिए, और instead of having like you should have real interaction with people and examine अपना जो वरीज है और कंसर्न्स है उसके बारे में डिस्कस करना चाहिए, ना कि वो छुपा के और walls create करके ना, we sort of try to disconnect ourselves from the world, and if we deny the details of our apprehension, we promote the attitude in others to operate similarly, like just that false confidence that I don't have any problems and I'm great, and instead of that, it is better to share your fears. It is always said that energy follows intent. So wherever I put my energy, energy flows. So if I put my energy on negativity, energy flows there. The internet can be used for good things. If I put my energy on the good things will multiply. So if I so depending on our attitudes, thoughts and feelings towards life's everyday circumstances. So this is how I think
Louis Hayes says, life is very simple. What you give out, you get back. So all of us have to take steps to diffuse that which we blow out of proportion through our fear. तो ये कोविड के टाइम में हमने देखा था कि फॉल्स इन्फॉर्मेशन की वजह से people were dying instead of media sort of tries to develop a false fear and takes advantage. So we have to be very aware and soul conscious and not get into this false sense of fear. We live in a very good world today, but people try to show that they try to scare us in different ways, but we should not be fearful. EEBs serve as teachers of younger souls whose soul evolution they support. They are just 5% of the earth population, and they are helping so many souls to evolve. So these EEB souls as guides, they are guides to particular souls. The guidey souls may or may not be incarnate. So they may have two splits that are incarnate. Often the EEB soul's higher self teaches its students in a classroom in the spiritual realm. So this is the astral travel which we can have every night, and pranic healing में बताते हैं कि जैसे एक intent के साथ हम सोते हैं तो our soul goes and learns everything at night and comes back in the morning with some very good knowledge. That's how Grandmaster Chalkworksy got his knowledge of pranic healing from. But our brains have to be upgraded, and we should be able to understand the messages. So अपना हार्डवेयर भी improve करना पड़ता है. So EEBs are expected by the masters of wisdom to be humble, taking their work seriously, but not themselves seriously, because you are very powerful. So that's how we see some of our spiritual gurus suddenly become very egoistic, and then that leads to their downfall. So in today's generation don't like to go to gurus because they're not humble. But if you have to be very humble and take your work seriously and go in a very simple way. So today's the common man can do this. Each of us can go and help in evolving at least one soul. And because of a very weighty pre-birth contract, advanced souls challenge themselves intensely to be of service on our planet at this time of profound need for equality and compassion. Compassion की बहुत जरूरत है कि बहुत सारे like people are just sort of very independent nowadays, and they don't have this tolerance. And but in general, you see that everybody's in today's world is better than the world which we had 50 years ago. We have more equality for women. We have more equality for the lower castes. We have more equality for people who are not educated. We have more equality for जिनको बहुत सारे languages नहीं आता है, उनको भी आजकल बहुत equality है. So we are slowly हम लोग जा रहे हैं equality और compassion की तरफ, लेकिन इसके लिए हमारे भी contribution चाहिए. और हम EEBs gain preparation to serve on higher panels of elder souls whose duty is to exercise a full court press on our higher and incarnate souls to cleanse our soul memory code, being honest about fox paths in past lives. So they also cleanse our soul memory codes. So just imagine how much work goes on. हम लोग कितने important है for this world change, and कितने लोग हमारे प्रयास कर रहे हैं कि हम change हो जाए and become ambassadors of equality and compassion. So Stella brings 25 to 30% of her soul energy into body to accomplish her agreements in her current life. A soul of average soul evolution generally brings 40 to 60% of their divine force into an incarnation. Like हम जैसे लोग 40 to 60% divine force लेके आए हैं, और Stella brought only 25 to 30%. It is likely that Stella's split incarnation brought a similar amount of soul energy, creating a balance of Stella 30% split 30% and higher self 40%.
जैसे एक बॉटल फुल ऑफ वाटर है, उसमें एक ग्लास में 30% है स्टेला, दूसरे ग्लास में 30%, दूसरे ग्लास में 40%. This subdivision of soul energy seems perfectly reasonable and manageable for an enlightened earth being. तो अगर आपको आगे का क्वेश्चन आएगा कि आपको चेक करना है कि आप एक एनलाइटेंड अर्थ बीइंग है कि नहीं, तो ये सब क्वालिटीज आप में है तो आप एनलाइटेंड अर्थ बीइंग है. तो स्टेला इज अ enlightened earth being because she's a teacher of souls who are her students. She has guides who are termed ancient ones. She has a soul split. She is an unassuming, humble teacher like Linda Backman. She receives details of how new souls develop. She brought less than the average parcel of soul energy into her present life. So how confident she is that मेरे को कम एनर्जी लेके कम पैसे से मैं घर चला सकती हूँ. जिम नेक्स्ट है. जिम द नेक्स्ट सोल रिग्रेशन क्लाइंट. वो डिटेल्स ही प्रोवाइड्स फर्दर डिटेल्स टाइड टू चूजिंग द पोर्शन ऑफ सोल एनर्जी टू इनविगरेट हिज इनकारनेशन एंड टू द रिजल्ट ऑफ हिज सिलेक्शन. लेकिन इतना भी कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए कि कम पैसा लेके मीन्स यू डोंट नो हाउ टू रन द होम एंड देन यू आर ऑल stressed out. So Jim was he's an example to show that don't be too confident. Try to bring what is needed. If the guides tell you that तुमको इतना एनर्जी चाहिए तो ले लो, तो उसका गाइड उसको बोल रहा है कि 31% ऑफ माय उसने सिर्फ 31% ऑफ उसका सोल एसेंस ही ब्रॉट. They recommend that I bring more because of the demands of my pre-birth blueprint. लेकिन वो एरोगेंट हो गया और वो बोल रहा कि मैं मैनेज कर सकता हूँ 31% से, बिकॉज उसका सोल कलर है ब्राइट ब्लू, इंडिकेटिंग एडवांस सोल कैपेबिलिटी. तो गाइड्स बोलते हैं ठीक है, तुमको लगता है तो फिर उतने ले लो 31%. आई शुड, लेकिन जिम बोलता है कि आई शुड हैव लिसन टू माय गाइड्स. माय गाइड्स टेल मी दैट इज हाउ वी लर्न एंड आई विल डू ऑल राइट. तो गलती करके हम सीख सकते हैं. दे से टू हैंग इन देयर and they will help him. Now they take him to the hall of records where the archives of his past lives are held. So when we go into past life regression, we generally go to our soul library and then a guide comes and removes the records and gives his comments. So here I am here to remind me that my current life was planned because I needed more experience on earth, even though I thought I knew all I needed to know. So now I want to know more about those souls who are the librarians in the hall of records in spirit. He wants to know about those souls who take out our books and tell कि तुम्हारे लाइफ में ये हुआ था, वो ये हुआ था. So it's a very interesting thing. So there is special training for the librarians. Library is my favorite place because they don't just get the books for you, they make comments about specific past lives. They can be very helpful if we listen to what they have to say. So basically, having that hardware to listen to these souls can be gained only through meditation and silence, and we have to be very pure and 100%, I think, soul conscious. So because he's a very advanced soul, he was allowed to step into his current life without more soul energy. I was not being as cautious and observant as I should have been. They think I have seen the light, meaning I will be a good exhibit for others when they choose how much soul essence to bring. So इस एग्जाम्पल से हम, जैसे हम दूसरों के बैड एग्जाम्पल से हम सीखते हैं, तो उनको उसको एग्जिबिट बनाया उन लोगों ने. So splits can happen, but my guides must look at the circumstances planned for both concurrent lives. Then they will advise the soul how much energy to bring for each split life. Just such a fascinating thing. Higher beings always observe embodied souls who are under stress like me with my amount of soul energy. The guides want to understand the negative possibilities that can happen. So
गाइड्स भी सीख रहे हैं कि मैं ये आदमी को मैंने इतना भेजा तो उसके प्रॉब्लम इसमें लाइफ में ये आ रहा है, तो आई हैव टू हेल्प हिम हियर, आई हैव टू हेल्प हिम देयर, एंड दे विल support him to get through his present life. In addition, guides will be able to advise other souls about how much soul essence to bring for each incarnation. Gym sessions broadens our perspective about souls and spirit and the leeway we are given to make certain choices. So free will is so much we are so blessed to have free will, but we should not use our free will in a bad way. So then we get all the dhakkas in life, divorce and miscarriages and abortions and financial loss, death of loved one, all these things आके फिर हम सीखते हैं, उससे अच्छा है कि उसके पहले सीखे. Enlightened earth beings, we learn that our guides will allow us to take on particularly taxing life experiences, since we have gained the fortitude over many lives to manage complex life events. लेकिन उनको पता है कि हमने इससे भी डिफिकल्ट सिचुएशंस फेस किया है, तो कम सोल एनर्जी लिया तो भी मैनेज कर लेंगे. The learning is multifaceted. Even at the soul level, we can be headstrong, believing we can cope, yet discovering we are on the edge of our abilities. Can you imagine? Like even at the soul level, हम लोग headstrong होते हैं ना कि hey, I can deal with less energy. I don't need your too much of the help, from guides. There is a soul learning to be gained both during, जब अपना incarnation होता है तभी भी soul learning है, जब डेथ होता है तभी भी soul learning है, and it is related to our tenacity that led us to manage stressful life choices such as health issues, relationships, and the like. So just imagine that all the things which we are running away from, like maybe difficult parenting, old age, divorce or something. So all these things, they're watching how you deal with it. And if you deal with it in a very calm and beautiful way, your soul is evolving. Or we may realize that we overloaded our life plan and we'll take this into account in future lives. So, कभी कभी हम बोलते हैं ना कि कर्मा को मुझे जल्दी बर्न करना है, तो you do lots of meditation and then try, all sorts of problems come into your life, and that is also a problematic situation for many people who are too much into meditation. So our guides function in a learning mode of how much free choice to allow us and where to draw the line. So these, we have to check with our guides before we take up more karma to burn. The Hall of Records and the role of the librarian fascinate Jim. So this Jim, though not explained by his guides, Linda बोल रही है कि Jim's higher self suspects it will be tapped for an upcoming responsibility relative to the energetic repository of all past lives. So slowly उसको expose कर रहे हैं कि और बाद में उसको responsibility मिलेगा शायद librarian बनने का. Finally, Jim's guides expand our understanding of the delicate balance of soul essence when a split incarnation happens. It's very, if you take a split incarnation, you have to be very, very careful to maintain the equilibrium. And the guides examine cautiously the commitments and intricacies of our split life blueprints to ascertain both the feasibility of two simultaneous lives and the necessity of sufficient life force for each incarnation. So it's so fascinating. And then you have, so why do we need to have these soul splits, Linda is asking, and how common are soul splits at this time? So based on her study of her clients for 40 years, she says high percentage of those advanced souls in their latter stages of incarnations have split incarnations. So latter years indicates the soul is likely to continue incarnation for 100 to 700 more
Earth years compared to the thousands of years that have come before. So thousands of years to आपने मेहनत करके फिर आप EEB बनते हैं और उसके लिए भी 100 to 700 Earth years लगता है. Upwards of 70% of EEBs manage split incarnation energy. 70% जो भी enlightened earth beings है वो अपने energy manage कर लेते हैं, 30% struggle करते हैं. At the same time, EEBs are a very small percentage of individuals on it. Probably less than 5% because the earth is filled with many younger souls. So enlightened earth beings are only 5% of the earth's population, and just imagine they manage, they are able to bring about change, and they're able to bring about equality and compassion. The difference between a soul that has one split and a soul that has more than one split depends on the life blueprint of a particular incarnation or a period of incarnation. So whether you need one split or more, or two splits or three splits, depends on your life blueprint of a particular incarnation or a period of incarnation. So it's like not just one birth, but many periods of incarnation. And it also depends upon the goals of the soul. Most important, it is based on one's pre-birth soul agreement for an incarnation and on one's soul evolution. With a more advanced soul, the decision is made to have overlapping incarnations to do more work, to evolve faster, and to learn different lessons. The concurrent incarnations are all working on different aspects of that soul's evolution. So 3 incarnated souls are all working for that soul's evolution. If a soul decides to bring another simultaneous incarnation, and if there are multiple splits of that soul, that amount of energy is not subdivided further. There is the same holographic portion of soul energy in every split. It is also important to know that when a soul has just one split or multiple splits, they can do great things and be of great service, or they can waste their incarnations. This is their choice. Can you imagine, like, you come with so much of purpose and then you forget about it, and some of them just waste their incarnations. So free will is, nobody can interfere with your free will, and I hope we never forget what we have come here to this world for. When it is decided in the spiritual realm that a soul will come into body and there is one or more than one split, the amount of soul energy brought to energize the split is determined by the level of evolution of the soul and by the demands of the life blueprint of the split or splits, because of the increasing number of advanced souls over the last 200 years. So we have been transitioning from the Piscean age to the Aquarian age. So all these advanced souls both log aa gaye in the last 200 years, and we have a great opportunity to evolve fast, and there are far more advanced souls with more splits than what used to occur before. So we are living in a very beautiful time to change and work on ourselves. Prior to recent times, enlightened earth beings were only in one body at a time. There was also a longer time between incarnations for an EEB. At this time, advanced souls are incarnate in one or more than one body almost all the time. So it's a huge help to all of us. As souls have advanced in their evolution, they have been asked to, and they volunteer to, be in more than one incarnation at a time. So they are such kind beings. They are volunteering. They're saying that, okay, I can be in more than I want to be a split soul. So the advancing soul heightens its creative ability with each step
along the soul scale. So that first scale, second scale, third scale, like seventh scale, eighth scale, and you go on, beyond that, beyond 8, you're going. As the soul frequency increases, you acquire the skill to subdivide your essence into more than one body at a time, assisting crucial planetary evolution. So during the Vesak, in pranic healing, we have a very good meditation on the full moon day. And that's when they say that at Kailash Mansarovar, all these souls come down, and we try to, it's a very good day to meditate and help the evolution of the earth. EEB souls often utilize their competence in the spiritual realm to support the masters of wisdom in the interrelationship coordination between ascended beings and incarnate souls. Those split souls infrequently meet one another. They can be assured of the opportunity to hasten karmic mending and to impact the earth more effectively. So kabhi-kabhi ye split souls mil sakte hai, and if they meet, then they are able to bring the change, bring equality and compassion to this earth very fast. तो इसमें आप कुछ questions आपको पूछ सकते हैं. I know that I have another incarnation of my soul at this time because. इसमें आप work कर सकते हैं, fill in the blanks कर सकते हैं. So if to determine the possibility of having a split incarnation, you have to pay attention to your thoughts and feelings about where your split might live and what life intentions to release karma your split may have. So this is a very intensive inner talk which we can have, and through meditation or past life regression we can find this out. So she's asking, are you open to have a soul regression and or meeting with a capable individual like Linda Backman, who channels to learn if you have any splits at this time? What do you think would be the benefit of learning that you have a split? अगर आप भूल गए कि आप क्यों आए हैं, तो if you know that you have a split, you will know that मैं waste कर रही हूँ मेरा life. If I happen to meet my split incarnation, how would I know? What commonalities of your soul would suggest that another person is the same soul as you? So आपको कैसे पता चलेगा कि आपका whether you have met your split incarnation? So this is a very beautiful chapter, and we can see many of our gurus maybe as EEBs. So are you there? Yes. Yeah. Yes. Yeah. Yes. So can we Yes. does anybody have any questions? Yes. Yes. I have Veena-ji. Yes. Deepti. हाँ, Yes. Ask Deepti ji. जी, बताइए. very nicely narrated the chapter. मेरे को एक क्वेश्चन ये समझ में मतलब पूछना है कि दो हमारे सोल स्प्लिट्स हो गए, तो now we are having 2 incarnations and the karma will also be like for 2 lives. वो कैसे फिर डबल नहीं हो जाएगा? लाइक वो कर्मा बैलेंस करने के लिए साइमल्टेनियस इनकारनेशंस हुए, पर अगर हम 2 बॉडी में है तो उसके भी तो कर्मा बन रहे होंगे, वो डबल नहीं हो जाएगा? नहीं, बेसिकली ना इन लोगों का पर्पस है ना, कर्मा अपना खुद का कर्मा का नहीं होता, खुद का कर्मा का हो गया उनका 5 के स्केल है ना, 1 to 5 तक उनका खुद का सब हो गया. हाँ. ये अभी अर्थ के लिए दूसरे सोल्स के लिए काम कर रहे हो लोग. Yes. अच्छा. फॉर दे आर वर्किंग फॉर कंपैशन एंड इक्वालिटी. तो वो केवल Yes, 5% लोग हैं जो कि ऐसा जिनके साथ होगा, and they are very advanced souls. It is not Yes. about 5%, it may be more. अच्छा. और सोल स्केल वाली पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है. ये 8 and beyond के साथ हो रहा है. हर एक
जो यंग सोल है, यंग सोल विल नॉट हैव दिस टाइप ऑफ एक्सपीरियंस। Right. ओल्ड सोल, ट्रांसेंडेंटल सोल, जो सोल स्केल में 8 एंड बियॉन्ड में है, उनके साथ ही ऐसा हो सकता है अगर वो चाहे तो, अगर वो ऐसा करना चाहते हैं तो वो कर्मा से वो काफी हद तक बाहर आ गए। कर्म अब उनका पर्सनल इवोल्यूशन से ज्यादा इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमैनिटी इज द पर्पस। कर्मा से वो ऑलमोस्ट ट्रांसेंड कर चुके हैं। Yes. सिर्फ इनकारनेशन से कर्मा जनन नहीं होता, इनकारनेशन लेने के बाद अगर हम गड़बड़ मचाते हैं, हम जज करते हैं, हम वायलेंस करते हैं, हम चीटिंग करते हैं, हम धोखा देते हैं, तब कर्मा बनता है ना। सिर्फ इंसान के रूप में होने से कर्मा नहीं बनता। कर्मा कम्स इफ वी डिस्टर्ब्स अदर पीपल, इफ डिस्टर्ब्स द बैलेंस इन दिस क्रिएशन। इनफैक्ट अगर हम बैलेंस रिस्टोर कर रहे हैं, देन वी आर एजेंट ऑफ healing the karma for others. These are healers, these are teachers, these are advanced soul. सर Yes. हम भी ई भी हो Yes. जाएंगे फिर। Yes, sir. सबसे पहले यहीं से उन्होंने स्टार्ट किया है कि EEB से they are the enlightened earth beings which are above the scale of 8. तो यहीं से स्टार्ट किया है, और उनकी they have the capability and they feel their responsibility to evolve the earth. एंड औरों को भी रेज करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो समझते हैं एंड दे वॉलंटरी काम कर रहे हैं। उनके लिए ये नहीं है कि उनको जरूरी करना है, और वो ज्यादा इनकारनेशन इसीलिए कर रहे हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा इवॉल्व हो कर सके, और अपना भी वो कर रहे हैं, अपना तो दे आर इवॉल्व है ना। तो दूसरों को वो चाहते हैं कि जो भी यंग सोल्स है, क्योंकि देर आर मोर एंड मोर यंग सोल्स, तो उनको वो इवॉल्व करना चाहते हैं, तो उनके लिए वो आए हैं। और ये हम पहले भी देख चुके हैं कि वो अपने जो हमारे स्पिरिट वर्ड से वो कुछ एनर्जी का फॉर्म लेके आते हैं, है ना। तो उसका भी यहाँ पर बहुत अच्छा बताया कि 40 to 60% लेके आते हैं। तो उसी को जो स्प्लिट जो कर रहे हैं, तो उसमें वो केस में लेकर आए हैं, वो कितना लेके आते हैं ये भी बहुत वैरी कर सकता है। यस बहुत डेटा वैरी करता है इसमें। यस अभी ये रिसर्च का सब्जेक्ट है कि कितना पे क्या क्या हो सकता है। सर इनको ट्विन Yes. सोल नहीं कहेंगे ना, ये they तो can't, they can't forget, they are just being, they are advanced soul, so Yes. forget वाला चांस ही नहीं है। यस और वो ज्यादा में भी हो सकते हैं, मतलब 2 से ज्यादा भी, लाइक हमने लिली के उसमें देखा कि 6 साइमल्टेनियस उनके इनकारनेशंस में, और उसमें भी उन्होंने लेसन सीखा, ऑनेस्ट, ओपन विद द अदर्स, वन सेल्फ, है ना। और स्टेला में भी उनको लेसन भी था कि हम्बल उनको रहना है, वर्क सीरियसली करना है, इस तरह का। एंड दे आर द टीचर्स, तो यही है। और वॉलेंटरी वो लेके आते हैं। और ये ट्विन सोल नहीं है ना, ट्विन सोल तो डिफरेंट हो गया ना। ट्विन ये सोल्स नहीं है, हाँ वो तो डिफरेंट है, ये तो इनकारनेट हो रहे हैं। यस और ज्यादा से ज्यादा वो काम करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा इवॉल्व, मेन पर्पस इज दैट। Yeah, because our brains are not developed na, so we need 2 or 3 brains in incarnated souls for that same amount of work. यस अब अपना हार्डवेयर अपग्रेड नहीं होता है। नॉट डेवलप्ड वो ज्यादा अच्छा नहीं होगा। टू डेवलप फास्टर, फास्टर, हाँ फास्टर डेवलप करना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पहले वो डेवलप नहीं है। अगर इंडिविजुअल सोल जर्नी की तरह, इंडिविजुअल जर्नी की तरह देखें, तो इंडिविजुअल जर्नी की जो रिक्वायरमेंट उतना वो डेवलप है। हाँ, इंडिविजुअल जर्नी के लिए डेवलप्ड है, लेकिन वर्ल्ड के लिए नहीं ना, वर्ल्ड चेंज के लिए नहीं। तो नहीं, और वो ये भी समझ रहे हैं ना कि क्योंकि देयर इज अ नीड ऑफ इक्वालिटी एंड कंपैशन, जितना वो इवॉल्व करेंगे तो उसके अर्थ का इवॉल्व होएगी ना अर्थ, तो उतना वो ज्यादा इनकारनेट हो रहे हैं, क्योंकि ज्यादा बॉडी में होंगे, ज्यादा वो होगा तो ज्यादा कर सकेंगे काम वो। अगर एक में ही रहते हैं तो, क्योंकि पहले की उन्होंने ये भी बताया कि पहले एक ही होता था, पहले ज्यादातर ये होता था, लेकिन आजकल जो है कि वो इनकारनेट ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि वी नीड दैट। 200 सालों में बहुत सारा आ रहे हैं, तो उतना चेंजेस भी हो रहा है ना, कितना इक्वालिटी है ना आजकल। बहुत Yes. सारा एंड एवरीवेयर स्पिरिचुअलिटी इज जस्ट लाइक फ्लरिशिंग। इनफैक्ट जैसे जैसे ह्यूमैनिटी ग्रो करते जाती है, वैरायटी ऑफ स्पिरिचुअल मिस्ट्री विल पॉप अप, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैपेबिलिटीज विल पॉप अप, जिसके माध्यम से हम जान सकते हैं। ऐसी ऐसी चीजें हो सकती हैं
जो पहले नहीं सुनी गई थी। अब जैसे इसमें इस केस स्टडी में एक आया है, अदर साइड में दे आर ट्रांसफरिंग समथिंग फॉर द हीलिंग पर्पस Yes. Yeah, एंड दैट Light. कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड। tactile, हाँ, we cannot describe, हाँ. तो मैं इसको पीएमएफ से कोलेट कर रहा था कि समथिंग इज ट्रांसफरिंग द एनर्जी फील्ड, डिफरेंट एनर्जी फील्ड के ट्रांसफर से डिफरेंट हीलिंग हो रही है, बट वी इन लेमैन टर्म इट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड। Yes sir, और एनर्जी उधर आ रही है और वो भी एनर्जी की रेज वापस भी दे रहे हैं। हाँ, ये भी बहुत अच्छा है उसमें। so ऐसे नहीं कि एक ही तरफ से आ रही है, दे आर एक्सचेंजिंग। latest innovation, latest technology reveal something higher spirituality. Yeah, like even now, like even Wi-Fi and all is so high, no? High type of technology. कहाँ से कहाँ तक voice पहुँचते हैं, कहाँ से कहाँ तक